और मैं स्टेज करता हूँ पीवीवी ज्ञानपीठ के हवाले इनके निवेदन पर। वो अपनी कुछ भावनाएं शेयर करना चाहते हैं। तो आइए सर। I will request to join our dignitaries of our school to join the stage with these dignitaries. A warm good morning to all. On behalf of our school, let's say thanks to all the management team of Holistic Science Research Center for making teaching learning workshop for Prabhuta Veena Vadni Gyanpet School very wonderful. We have learned a lots of things from this training. Please clap. Really, we have learned lots of things from here. Now, I request to our director sir to give memento and shawl to President of HSRC, Shri Vasant Bhai Patel. Please. Thank you, sir. I request to our chairman, ma'am, to give memento and shawl to Sri Lalabhai Patel, Vice President and Academic Head. Thank you, sir, for containing such a nice workshop for us. Yes, sir. Okay, on the behalf of Lalabhai Patel, this Chandrakant sir will receive this award. Okay. शिक्षक मित्रों, आदरणीय श्री लाला भाई पटेल साहब हमारे होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट, एकेडमिक एंड रिसर्च दोनों संभालते हैं। और हम सभी एसोसिएट्स के, मैं नेहाबेन गांधी मैडम, ऋषिक करेटिया सर, जिन्होंने यहाँ सेशन लिए हैं, हम सभी एसोसिएट्स को लाला भाई पटेल साहब ने ट्रेन किया 1 साल तक। तो हमारे भी वो गुरु है। और ये उनका भाव था जब मैंने आपके बारे में उनको बताया कि लाला साहब सिलवासा की स्कूल है, वो टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप करना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सेशन के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब देखिए, मैं आपके यहाँ आता तो बस आपको मेरे साथ ही मुखातिब होने का मौका मिलता। तो ये लाला साहब का प्रस्ताव, वसंत काका का प्रस्ताव था, यहाँ का माहौल उनको देखने दो, टीचर्स को यहाँ बुलाओ और खर्चे की चिंता तुम मत करो। ये मेरे लिए वार्निंग थी। यू डू नॉट बॉदर अबाउट एक्सपेंसेस, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। टीचर्स को बुलाओ, 2 दिन यहाँ सेमिनार करवाओ। तो ये लाला भाई का जो भाव था ये रूपक में आया है। तो लाला भाई साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, sir, for giving such a nice words. Now I request to our principal ma'am to honor with memento and shawl to Registrar Pratap Singh Singh Jhalalal ji. Pratap Singh Jhalalal ji. On behalf of him, Shivastav sir will receive this. प्रताप सिंह झाला सर हमारे रजिस्ट्रार हैं, उनकी ओर से भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल हमने उनके वक्तृत्व का आनंद उठाया। आपके स्कूल के नाम का मतलब उन्होंने अपने तरीके, अपने अच्छे विचार से समझाया। तो झाला सर की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir.
Now I request to our chairman ma'am to give memento and shawl to trustee Shri Gunwant Bhai Patel. Please. Sir, your turn. ये वाला ये करना है। नेहा मैम वी हैव सबका नाम क्या है? चंद्रकांत. Now I will request to our principal ma'am to give memento and shawl to Mr. Chandrakant Srivastav sir, director of HSRC, who played key role. नहीं ये director से बोलना है. बस एक ही लाइन बोलूंगा मैं। अब वापस आज आप लोगों ने मेरी हैट्रिक करा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और बार है सर एक और बार है क्या? एक और बार आने वाले हैं कहाँ? नेहा मैम के जगह पे. बस बस काफी है, हैट्रिक हो गई, अभी कितने विकेट लोगे? ठीक है, थैंक यू। Right. I called our director sir to say about this program. Please welcome our director sir over here. Good morning, everybody. Honorable President Sir, Vice President Sir, Director Sir, all the dignitaries, Prabuddha Vinavadni Gyanpit Kodacha got an invitation to come here and got an opportunity to learn and grow. So I would like to extend my deepest gratitude to HSRC and team for providing us with such an opportunity on the behalf of entire PVV Gyanpit school team. HSRC is one such organization which continuously keeps working for the wellness, prosperity, and peacefulness of the society. So, this is one such beautiful example wherein we are giving back to the society, and there are very few organizations which do this kind of work. It gives me immense pleasure to see various areas where they have been working, which are very critical, rare at the same time, they are very important also for the society, including but not limited to the natural wellness, personality development, life and living, and yoga. So these days, if you look at it, everybody is so busy, right? We don't have time. Forget about others. We don't have time for ourselves, right? So we have become so mechanical. We become so busy that we have actually forgot the purpose of life and the way in which we should live our life. So, this is one such organization which talks about, at least talks about it, and teaches us. It tries to remind us our goal. And it gives me immense pride also. My heart fills with pride when I see that we got a chance to associate with one such organization, at least for a couple of days only, for now. And I hope that this association will go longer in the future.
also. So thank you, sir. Thanks for giving us this chance. We learned a lot during a couple of days, at least, and I know, I mean, all of us know it's not done yet. So it's going to happen at least till evening today. Um, One more thing, I would like to thank all our trainers also. I have attended so many seminars and trainings in the past, and one thing I can say that this training is very hands on. I mean, at the same time, theoretical part is very less, but the practical part is more. So, this is one thing which impresses me a lot, right? And I know that this kind of content cannot be prepared in a day or two. So, it takes a lot of efforts to design such kind of in-depth, precise, and to the point courses. So, I would like to thank our trainers also. Um, yeah, thank you, Neha ma'am. I liked your session a lot. And there have been so many critical sessions since yesterday: time management, stress management, child psychology, heartfulness. You know, um, I personally liked all of them a lot, and I know that there is a dire need of these kind of things in today's time. One more thing to all my teachers, I would like to say, dear teachers, you got an opportunity, you have been getting this opportunity to learn. Please don't waste it. Please try to implement all this learning which was pretty hands on to your day to day life, to your task. Don't forget it. It's not just only for learning and forgetting. So please try to implement it. And when we talk about learning, this is something which is very important. I think, as Neha ma'am only said yesterday, once a teacher is always a teacher. So it's your job. It's expected from you to keep teaching always, not now, but in the future also. And if you don't keep yourself updated by learning new things, for example, what we have been learning during this session of 2 days, right? So if you don't keep learning, you will become obsolete from the industry, right? So keep learning. That is very important. And I can give you a few examples when people didn't keep themselves updated and got out of the industry, right? So I think most of you know about Windows 95, right? This was one of the operating system, Windows 95, right? Windows. So there was a very big team of Windows 95 for the maintenance of it. Now 95 went, 98 came, XP came, Professional came. Now Windows 10, 11 came. So nobody cares of those people who are maintaining 95, and all those people lost their job. Why? Because they didn't updated themselves with the new things which are coming in the market, right? Another example, in previous time, those stunt scene were filmed using a helicopter, and there was a videographer sitting on the helicopter, in the helicopter, and taking all those scenes, stunt scenes. So those kinds of jobs are also gone. Why? Because now drone came, right? So if those people didn't update themselves, their job will also be gone. So, and there are many more such examples. So, what is important? Important is to keep learning and keep updated yourself. Once again, I would like to thank um, Team HSRC on the behalf of PV Gyanpit for providing us with such a wonderful opportunity to learn and grow. Thank you very much. Thank you, sir. I request to our Vice Principal, sir, to give memento and shawl to Neha Gandhi, ma'am, who is Director of Shaksham School and a National Trainer of Yoga.
I request all the dignitaries of Prabhuda Veena Vadni Gyanpith School to present token of love to President Shri Vasant Bhai Patel. वसंत काका अपने भाव स्पष्ट करना चाहते हैं। जय सच्चिदानंद। जोर में बोलो, जय सच्चिदानंद। દાદાનું જે સાયન્સ અંદર પરિણામ પામ્યું છે એની વાત તમને કરીશ એટલે ખબર પડે કે ગયા ભાવમાં જે રિહર્સલ કરેલું તે આ ભાવમાં નાટક રૂપે આપણે કરી રહ્યા છે। એટલે હું કરું છું માનવાનું પણ થઈ રહેલું છે તેને જુઓ અને જાણો, અને જુઓ ને જાણો તો રાગદ્વેષ થશે નહીં તમને કોઈને માટે। બીજું કે મને એમ થઈ ગયું મનમાં જે થાય છે એ આગલા જન્મમાં ભરેલો માલ નીકળે છે, આખું પેમ્પલેટ નીકળે છે, તેમાં તમને થઈ નથી ગયું તો એને પણ તમે જુઓ અને જાણો। હવે તને તારા ફૂટતા હોય તેમ અંદર બેઠા બેઠા આપણે હોય તો અંદર ફૂટતું હોય તો એને જુઓ ને જાણો, પણ એમાં વિચરો નહીં। વિચરો એટલે વિચાર થાય, ખાલી જુઓ ને જાણો। બીજું દાદા કહે છે કે હુ ઇઝ અ ફાધર એન્ડ મધર ઓફ માઇન્ડ। આ જો ખબર પડી જાય આપણને તો ડૉક્ટર્સ અને લોયરના ધંધા બી બંધ થઈ જાય એવું છે। તો આપણે બેઠા હોય એના અંદર જે અંદર તનકતાળા ફૂટતા હોય એને દાદા ભગવાન ઓપિનિયન કહે છે। તો એ ઓપિનિયનને તમે ખાલી જુઓ, એને વાણી પણ નહીં લાવો। એટલે ઓપિનિયન અને લેંગ્વેજ, ઓપિનિયન ઇઝ અ ફાધર અને લેંગ્વેજ ઇઝ મધર, બેના લગ્ન નહીં થવા દો તો તમારું લાઈફ એટલું બધું સુંદર જશે કે રાગદ્વેષ વગરનું ને આનંદથી ચાલશે, અને તમારું ચારિત્ર બળ એટલું બધું ખુલશે કે જગતના માટે તમે સંસ્થા માટે ઉપયોગી થઈ પડશો અને કામ સારામાં સારી થશે। બીજું અહીંયા પ્રાર્થનાની બુક આપશે ચંદ્રકાંતભાઈ, તો એ ઘરમાં જે કહેવાય છે ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ ધી હોમ, તો 10 થી 15 મિનિટ એ આપણે વાંચન કરીએ અને નાનું બાળક ત્યાં સૂતેલું હોય તો એની અંદર એ સંસ્કાર પવાતા જાય। એમ કહેતા બાળક 8 થી 9 વર્ષ થાય તો જે આપણે નિત્ય કર્મ જે કરતા એમાં પરિણામ પામી જાય। તો અમારો ગ્રાન્ડસન છે આજે 32 વર્ષનો છે, એ નાની બેબી હતું ત્યાંથી અમારી સાથે રાખતા સાથે સુવડાવતો બપોરના, તો એ એવો તૈયાર થઈ ગયો છે કે 500 માણસ આગળ લેક્ચર આપવું હોય તો હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશમાં અમેરિકા બોર્ન છે એ બાળક આપી શકે। હવે સંસ્થાને 14-15 વર્ષ થયા, સિસ્ટમ આખી અમારી ડેવલપ થઈ ગઈ છે અને આ સિસ્ટમ ચાલવી જોઈએ। તો ચંદ્રકાંતભાઈ અને લાલાભાઈ સાથે હવે નક્કી કર્યું કે 2nd બેટાલિયન આપણું તૈયાર થઈ જવું જોઈએ, જેથી આપણી ગેરહાજરી હોય તો સંસ્થા તમારી ચાલે દાદાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે। તો જે ગ્રાન્ડસન છે એમાં રામતીર્થ છે 32 વર્ષનો, એ મારી પોઝિશન લઈને કામ કરવાનું શરૂ કરેલું છે। તો બાળકો આપણે એવા તૈયાર થાય કે જગતના માટે, એને પોતાના માટે, પોતાની ફેમિલી માટે એવો તૈયાર થાય કે સ્વતંત્ર બની શકે। અને તમે બધા આવ્યા, સંસ્થાનો ખૂબ જ આભાર। મધર છે તે યુનિવર્સિટી છે, ફાધર કરતાં મધર વધારે ઉપયોગી છે બાળકોના ડેવલપમેન્ટ માટે। અમારા વાઈફે BSc
મેથેમેટિક્સ સાથે કરેલું અને પછી બીએડ કરેલું હમણાં. તો શૈલેષે અમારો એક સન એને એવો તૈયાર કરેલો તમને કહું કે રિયલી એણે ટીચર તરીકે કામ બરાબર કર્યું છે. ધરુબેન 23મી જાન્યુઆરી 23ની દાડે ઓફ થઈ ગયા. તો એમને નામે તમારી સંસ્થાને દર વર્ષે 5 વર્ષ સુધી 1 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે તમને. તો સંસ્થાના સદુપયોગ માટે તમારે એનો ઉપયોગ કરવાનો. 5 વર્ષ સુધી મળશે તમને 1 લાખ દર વર્ષે. હો, જય સચ્ચિદાનંદ. આ દાદાની ભેટ છે એમ કે. હો, Thank you, sir. Thank you, Vasan Kaka. Thank you very much for your blessings. So now we are in the concluding ceremony. In these 2 days, I sincerely express my gratitude for your cooperation. हमारे इन 2 दिनों में कई जगह पर कई गलतियां हुई होंगी, उनको आप विशाल हृदय से क्षमा कर देना, माफ कर देना. और ये जो 2 दिन का हमारा कार्यक्रम था, इसकी तैयारी काफ़ी अरसे से चल रही थी. और जब जब मैं इस कार्यक्रम के बारे में सोचता था, वसंत काका स्टेज पर आओ तुम्हें, तब तब मुझे श्री प्रवीण जी कुलश्रेष्ठ, इनका चेहरा भी दिखता, इनके साथ बहुत सी यादें जुड़ी है. हमने साथ में काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा. उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सिखाया. एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व और एक वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी स्कूल लायंस स्कूल, जिसमें 4000 के करीब बच्चे हैं, ABCDEF 5-5 सेक्शंस के क्लासेस, टीचर्स बहुत ज़्यादा, वाइस प्रिंसिपल कोई नहीं. तो इतना बढ़िया सिस्टम उन्होंने बनाया कि वही सिस्टम वहाँ जो लोग एज ए टीचर काम करते थे, उन्होंने सीख कर और कितने स्कूल में वही सिस्टम चलाया. So very great man, great administrator, a nice person, and very simple living, and straightforward, and very energetic. 5 बजे के बाद श्री प्रवीण जी और हम, उनका एक नियम था, लायंस स्कूल के कॉरिडोर में बहुत देर तक 20, 25, 50 राउंड लेकर हम सब घूमते थे. तो हम उनको तहे दिल से, मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए. 1 वर्ष उनको जाने के लिए हो गया है. हम भगवान से, दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शांति, सद्गति मिलें और उनका आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर बना रहे. ओम शांति शांति शांति. प्लीज टीचर्स, अब हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं. आप अपने फीडबैक फॉर्म्स तैयार रखिए. दोनों एक्टिविटी, अभी दोनों टास्क हम पैरेलल ले लेते हैं. तो वसंत काका के शुभ हाथों से ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा. हमारे मनीष त्रिवेदी सर भी हैं, आ जाइए सर स्टेज पर. ये वसंत काका जी को बहुत देर तक कष्ट देना भी ठीक नहीं है, तो उनकी मदद करने के लिए मैं मनीष सर को बुला लेता हूँ. आप एक एक करके आइए. ये आपकी कमाई है 2 दिन की. 2 दिन में आपने जो मेहनत की है ना, तो ये आपकी अर्निंग है. रखना संभाल के इसको. इसको देखकर आपको ये 2 दिन हमेशा स्मरण रहेंगे. मैं सबसे पहले बुलाता हूँ पूजा कुलश्रेष्ठ. आइए मैम. ये सभी फोटो YouTube की लिंक आपको शेयर की जाएगी. प्रफुल्ल जी कुलश्रेष्ठ.
प्रिंसिपल मैडम बिंदु कुलश्रेष्ठ। वाइस प्रिंसिपल सर श्री शिवम वाजपेयी। नेहा सुभाष पटेल। रानी कुमारी। फीडबैक फॉर्म्स आप शिवम सर के पास इकट्ठा कर दीजिए, बाद में हमको बंच दे दीजिएगा। रानी कुमारी। कीर्तिबेन प्रजापति। कीर्तिबेन ने आज दो दो रोल निभाए, मदर और टीचर। वेरी गुड, हाँ, विथ सक्सेस। रोशनी पटेल। अरे अरे। किरण पटियाल। मुस्कान सिंह। ईला भुरकुड। भावना कापसे। उर्मिला शर्मा। प्रीति झा। गमन फरालिया। नीलेश दीक्षित। लक्ष्मी चेट्टियार। गुंजन ठाकुर। रूबी कुमारी। अरे योगेश पटेल। जयमती चौधरी।
चांदनी सिंह, सुप्रिया पाठक, ज्योति शर्मा, मैं उम्मीद करता हूं आपके फीडबैक फॉर्म भर रहे हैं, उसमें परामर्श अवश्य लिखिए आप, कोई सजेशंस है मोस्ट वेलकम, कहीं कोई कमी रह गई बिल्कुल निसंकोच लिखिए। सुषमा गिराशे, ताकि आने वाले समय में हम भी इंप्रूव कर सके। निशा सिंह, प्रणामी पटेल, प्रियंका पटेल, मनीषा रोहित, every teacher is individual and every teacher is unique. This certificate distribution will take time but it is very necessary for us. सभी का नाम, सभी को यहां आना है स्टेज पर। प्रिया शुक्ला, ध्रुव पटेल, सुशीला भोया, लक्ष्मी सामंतरा, अंजू देवी, सरस्वती वाजपेयी, नीलम कुमारी, पूजा आर्या, शालिनी डोकानिया, पुष्पा बीज, વસંત કાકા તમે બેસી જાઓ, બેહીને આપો તો બી ચાલે, પ્લીઝ। પુષ્પા બીજ, સતવાસ નાડગે, राजेंद्र सिंह,
संतोष गावित, दक्षाबेन पटेल, दक्षाबेन एना પછી તમારા हाँ दक्षाबेन पटेल, अरुण कुमार मिश्रा, आकाश चौधरी, संगीता चौधरी, दिया करायात, संध्या झा, शिखा शर्मा, प्रियंका बेन पटेल, एंड फातिमा तलवाला। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका हम अभिवादन करते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 दिनों तक लगातार। चलिए आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। फीडबैक आपने जमा करा दिए होंगे। अब आप में से किसी को ओरल फीडबैक देना है या अपना मनोगत व्यक्त करना है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। 10 मिनट हमारे पास और हैं। किसी को कुछ कहना है, आपका अनुभव आपको कैसा लगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको कुछ लाभ हुआ तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए, मैं माइक लेके आपके पास आता हूँ। First of all, good evening all the dignitaries present here, dear teachers. I feel blessed that I am here, and yesterday and today I have learned many things which I am going to implement in our school, and I think our school will be the happy school and our teachers and students will be happy, even parents also. Sir, thank you for providing us this great opportunity. We are here to learn something different. Thank you on my behalf, means on behalf of PV Gyanpit team. गुड इवनिंग यू ऑल। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित संस्था के मान्यगण आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ बैठे पीवी विज्ञान स्कूल पीठ फैमिली के मैनेजमेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ का हमारा 2 दिनों का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से कोई शायद ही भूल पाएगा, क्योंकि हमने जो अपनी लाइफ हम बच्चे थे जब पढ़ते थे तब हमने कभी फील किया होगा, लेकिन हम एज ए टीचर बच्चों को जो सिखाते हैं आज हमने खुद वो फील किया। और इस संस्था का जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए तो सर मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए बयां करने के लिए।
सच में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। किसी को शायद ही किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई होगी। हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर और धन्यवाद करते हैं आपका, जो हमें ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी, हमें कुछ नया सीखने की, यहाँ आके अनुभव करने की। आपने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, वो हम ज़रूर अपने जीवन में धारण करेंगे और जो नई चीज़ें सीखी हैं उनको हम अपने स्कूल के लिए भी अप्लाई करने का कोशिश करेंगे सर। और एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद सर। HSRC मतलब ये संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रेसिडेंट सर और सभी मैनेजमेंट डायरेक्टर सर, श्रीवास्तव सर। हमें यहाँ 2 दिन जो भी चीज़ें प्रोवाइड की उनके लिए हमारे सभी टीचर के साथ मिलके हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर सर, चेयरमैन मैडम, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, टीचर्स, जो मैनेजमेंट ने हमारे लिए जो व्यवस्था की और यहाँ पर आने के लिए जो प्लानिंग बनाए थे, सही में सक्सेसफुल रहे। और यहाँ का जो मैनेजमेंट जो भी चीज़ें प्रोवाइड की बहुत टाइम टू टाइम हुई। और यहाँ के जो भी लेक्चर आए, हमने सभी लेक्चर्स को सुना और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। सभी बात हम नहीं बता सकते, लेकिन सभी ने बहुत अच्छे से वो सुना और सभी ने अपने दिमाग में उतारा है। सर, हम कहीं ना कहीं स्कूल में कोई भी जगह पर जॉब करें या कोई भी फैमिली में, तो हम अच्छा सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। चलिए, अब कार्यक्रम बचता है हमारे फोटो सेशन का, जो हम राष्ट्रगीत के बाद यहाँ करने वाले हैं। एक अंतिम बात ही मैं आपको जाते जाते ये कहूँगा, आपके शुभ यात्रा की कामनाओं के साथ। चाणक्य का कथन है, शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, प्रलय और विनाश उसकी गोद में खेलते हैं। बस इसी के साथ जय सच्चिदानंद। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, हम राष्ट्रगीत करेंगे। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। फोटो सेशंस के लिए आप यहाँ आ जाइए। वसंत काका के साथ एक फोटो होना चाहिए हमारा।